Namaskar, Swagatam. We would like to welcome you on our 646th milestone of AYUSH SAMRIDDHI, the journey of knowledge, the journey of exchange of views initiated by Independent Research Ethics Society. Thank you. We are celebrating today IBS Awareness Month. So we have selected today's day for irritable bowel syndrome. Thank you. Thank you very much for joining. Thank you all as speakers, as guide, as mentors. We are really overwhelmed that due to your continuous support, we are able to reach on this path of the knowledge sharing. Thank you. Thank you very much. Without wasting much time, I would like to request Professor V.K. Agnihotri sir for welcome initial approach. Welcome, sir. Namaskar, Professor Pawan Sharma. Thank you so much. Today we are spending on 646th step of our continuous almost 3 years journey of international webinar, the two in a form of continuation, spreading of knowledge, getting knowledge and spreading knowledge. So today we are going to talk about the subject irritable bowel syndrome, care and cure. So this is the occasion when we are supposed to welcome our all the dignitary distinguished guests, starting with Professor Dr. Nishant Shukla ji, who is a professor in Kaya Chikitsa Department, Shri V.M. Mehta Ayurvedic College, former head Kaya Chikitsa, Shri Gopal Ayurvedic College, Anandpur. And we all know that he is a very distinguished personality, having a lot of deepest knowledge of Ayurveda and also the correlation with the modern medicine. So though this irritable bowel syndrome is not a subject, a word used in Ayurvedic text classics, but still, since it is nowadays in practice, so he will like to correlate with all deepest nook and corners that how it can be leveled up with our terminology. Again, we are going to, so welcome Dr. Professor Nishant Shukla ji. And now our next guest speaker is now respected Dr. A.K. Gupta ji, who is the founder director of AKG's organs and an ex-guest professor, College of Homeopathy, UK. Nowadays, he is in New Delhi. So it's a pleasure to welcome him. And we do hope that from homeopathy subject and homeopathy side, we are going to learn a lot on this IBS syndrome, especially how it can be cared and how we can be keep ourselves away from this disease in such a hectic life scenario in present era. And our very good friend Dr. Alok Sharma is our next guest speaker, having a great knowledge of Kaya Chikitsa itself, postgraduate from NIA, and he's director Anand Ayurvedic Hospital in Meerut. Very interesting that he has made a very good dent in modern medicine hospital, managing himself at a director post and getting all the challenge-based patients with the treatment, of course, with Ayurvedic. And he gave a good output during the COVID corona. So he is with us today. So with a very warm welcome, we invite all the 3 persons today in our this platform, and we are definitely quite sure that we are going to learn a lot good information from all the pathies covering will be covered by our distinguished speakers. So thank you so very much, and over to Pawan Sharma ji. Namaskar. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार। IBS एक ऐसा रोग है जो मैं परसेंटेज तो नहीं जानता, लेकिन प्रज्ञापराध के कारण लगभग हर 3 आदमियों में से 1 आदमी को तो है। वो किसी भी बहाने हम दे लें, कोई कॉन्स्टिपेशन समझता है, कोई ज्यादा पेट की कोष्ठ क्रूर है ये समझता है, लेकिन मॉडर्न उसको IBS कहती है। तो मैं ज्यादा इसके पृष्ठ पेषण में न जाते हुए अपने ज्ञानी विद्वत जनों से मैं ज्ञान चाहता हूं, ज्ञान की प्रार्थना करता हूं। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे साथ लातविया से
ऑनरेबल चेयर ऑफ द आयुर्वेदा डॉक्टर शांतला प्रियदर्शनी जी जुड़ी हुई है, जो एक अंबर का भंडार है लातविया में। आई वेलकम डॉक्टर शांतला जी ऑन द प्लेटफॉर्म। डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद जी, मधु शर्मा जी, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मधु शर्मा जी कि कल वो गाजर के ऊपर कुछ बोले। टुमारो इज इंडियन कैरेट डे एंड नेशनल कैरेट डे, so thank you very much. I would like to request Dr. Nishant Shukla for his speech. Welcome Dr. Nishant. नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। ये आ गया आंसर? ओके। सबसे पहले विद्वतगण को शत शत नमन। पवन शर्मा जी और विकी अग्निहोत्री सर दोनों का खूब खूब आभार कि मुझे चांस दे रहे हैं। अग्निहोत्री सर ने जिस प्रकार से आईबीएस के लिए कहा कि एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये बात कहीं ना कहीं सच भी है, और आयुर्वेद के हिसाब से इंटरप्रेट करके हम चिकित्सा ये करते हैं। सर पवन सर ने जो दूसरी बात बताई कि कॉन्स्टिपेशन को, फिर एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स को, डायरिया को, क्रोनिक कोलाइटिस को, म्यूकस कोलाइटिस को, ये हम करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आईबीएस के साथ ये रिलेटेड है। ये प्रॉब्लम प्रज्ञा पराधज ही हमें मान के ये चलना पड़ेगा, और आगे इस पर थोड़ी मैंने जो दोनों साइंस से मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो आपके साथ में शेयर भी करूंगा। तो ये कहीं ना कहीं ये मेंटल हेल्थ के रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, और इसमें स्पेसिफिकली कोई पैथोलॉजिकल चेंज एविडेंट जो है ये नहीं होता। ये इसकी सबसे बड़ी जो है ये दिक्कत है। इस पूरा जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है, इस पर मैं दो चीज जो है वो कहना चाहूंगा कि मेरा जो कंसंट्रेशन है वो किस प्रकार से आईबीएस के लिए अवेयरनेस को सोसाइटी में बढ़ाई जाए, और आईबीएस के लिए कंसल्टेशन आयुर्वेद में लोग करें, केवल मेडिसिन नहीं पर कंसल्टेशन करके मेडिसिन करें। तो उस किस हिसाब से हम कर सकते हैं, और आयुर्वेद में क्या क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज अवेलेबल है, उस पर मैंने ज्यादा फोकस किया है, ना कि मेडिसिन पे, क्योंकि ऑलरेडी एक दूसरा वेबिनार इसी के कंटिन्यूएशन में ही हम मान सकते हैं ऋतुहरितकी और कुटजी दोनों कहीं ना कहीं इसके ट्रीटमेंट से ही एसोसिएटेड हैं। तो इस पर ज्यादा चर्चा जो है वो होने ही वाली है, तो मैंने अपने आप को केवल यहाँ तक सीमित रखा है। तो what is the role of Ayurveda and how we can create the awareness in society with the Ayurveda। तो यही जो है वो टॉपिक के साथ मैं अपना प्रस्तुतिकरण चालू कर रहा हूँ। Now coming on to the history of the IBS month, basically the objective of creating the awareness is the sole motto of this observing this month. IBS is a major problem concern in the civilized society and the developed countries. It is not about the problem of the developing countries, but it is the problem of the developed countries. तो वहां पर हर एक चीज को पैथोलॉजिक हो, और वो पैथोलॉजी जो है वो कोई एक्सटर्नल एजेंट से हो, उसी प्रकार से मान करके ये ट्रीटमेंट ये होती है। whenever there is a pathological change or there is inflammation, there is infection, or when there is an infection, try to find out that infection, trace them out and establish the diagnosis। तो उस हिसाब से ये एक अप्रोच रहा है, और ये दिस इज फ्रॉम द रॉबर्ट कॉक्स अप्रोच टुवर्ड द जर्म थेरेपी, जर्म थियरी ऑफ द डिजीज। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशंस भी आती है कि जहां पर बॉडी की खुद की इम्यून सिस्टम ये प्रेजेंट ये करती है, और दैट क्रिएट्स द डिस्कम्फर्ट। तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जहां पर
इस प्रकार से एलिसिट करना ये पॉसिबल नहीं होता, पैथोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन ये नहीं मिलते। एंडोस्कोपी में, कोलोनोस्कोपी में जब करते हैं तो कोई एस्टेब्लिश्ड चेंज ये नहीं मिलता है, पर पेशेंट दैट कीप्स ऑन सफरिंग एंड द लाइफ ऑफ द पेशेंट इज सिवियरली डिस्टर्ब, साइकोलॉजिकली ये डिस्टर्ब हो जाता है, फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो जाता है, डाइट है, फूड है, उसको जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकता है, रूटीन उसका जो है वो चेंज हो जाता है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये कहीं ना कहीं दूसरे प्रॉब्लम में ये आकर के फंस जाता है। तो इसके लिए व्हाट आर द ट्रीटमेंट मोडालिटीज, अप टू व्हाट एक्सटेंट वन शुड बी अटेंटिव, आफ्टर व्हाट एक्सटेंट वन शुड नॉट बी अटेंटिव, तो इन सभी बातों को किस प्रकार से हम कर सकते हैं, दिस इज अबाउट ऑल दिस वन। ड्यूरिंग दिस टाइम वी जॉइन पेशेंट, फैमिली मेंबर्स एंड को caregivers to increase public awareness about IBS to help legitimate the different types of IBS. This is the theme of the IBS Awareness Month 2003. बेसिकली 4 फॉर्म में IBS को कैटेगराइज किया गया है, पर कॉमनली जो है वो 2 फॉर्म ज्यादा पॉपुलर है। डायरियल प्रोन जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा मिलता है, और सेकंड वन इज द कॉन्स्टिपेशन प्रोन। थर्ड जो है ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म मिलता है, पेशेंट को थोड़े समय के लिए डायरिया होता है, थोड़े समय के लिए कॉन्स्टिपेशन होता है, एक हफ्ता 15 दिन महीना पेशेंट को जो है वो कॉन्स्टिपेशन, सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो गया, वो हरड़ ले लिया, अमलतास ले लिया, नसोतर ले लिया, और उसको जो है ये डायरिया शुरू हो गया, उसके बाद उसने कुटज ली, परपटी ली, और फिर से कॉन्स्टिपेशन। सो ये इस प्रकार से टोजिंग जो है ये उसका होता रहता है, ऑल्टरनेटिवली ये होता रहता है। और तीसरी जो वेराइटी है दैट इज अननोन वेराइटी, इसमें क्या हो सकता है, दैट इज कंटिन्यूअसली ये चेंज के रूप में ये मिलते हैं। तो बेसिकली वी वांट टू increase the awareness about the different types of the IBS and medication as per the consultation. So this is to increase the awareness. IBS is a very common with prevalence estimated to 5 to 10% worldwide. So this is a very big problem. हम अगर इंडिया में ही इस बात को देखें, इंडिया में इस प्रकार से रिकॉर्ड जो है वो नहीं है, पर इंडिया की ही हम बात करें तो इट इज मोर देन 15% ऑफ द टोटल OPDs दैट वी आर हैविंग। तो ये इसके साथ जो है ये हमें मिलती है कि पेशेंट फ्रीक्वेंटली कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन करता है, फ्रीक्वेंटली इरेगुलर बोवेल्स की कंप्लेन करता है, और जब उसको एंडोस्कोपी या कोई टेस्ट वगैरह करवाते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन में कोई विजिबल पैथोलॉजिक चेंज, अल्सरेशन या इन्फ्लेमेशन ये देखने नहीं मिलता है। तो दीज ऑल आर द केसेस व्हिच इज ऑफ ए फंक्शनल वेराइटी, दिस इज अ फंक्शनल मैकेनिज्म। तो दिस इज द फंक्शनल डिसऑर्डर एंड दैट्स इट इज रिलेटेड विद द साइट। तो ये प्रज्ञापराधत जो है ये इसमें डेफिनेटली ये होता है। Yet many people remain undiagnosed and unaware of that symptom indicate medically recognized disorder. Many people ये नहीं करते, they are taking this as a simple changes, and they often take the self medication and they harm themselves. So from 1997, International Federation for Gastrointestinal Disorder has designated this month of April as IBS Awareness Month. Awareness and involvement, raise awareness about IBS, improve our ability to impact positive outcome, additional research in the management of the IBS. These are the goals set by IFFGD. तो आयुर्वेद में इसकी मैनेजमेंट हम करते हैं, पर उस प्रकार से हम प्रोजेक्ट नहीं करते। इसके कारण पेशेंट जो है ये आयुर्वेद के पास नहीं आता है और केवल उनकी कंप्लेन लेकर के आता है। हमें इस चीज को ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि भाई कॉन्स्टिपेशन में उसको किस वैरायटी से जो है वो हो रहा है, या फिर उसको डायरिया हो रहा है तो वो किस वैरायटी से ये हो रहा है। इंक्रीज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, पेशेंट को एजुकेट करने की अपॉर्चुनिटीज को हमें बढ़ाना पड़ेगा। इम्प्रूव पेशेंट केयर विथ द फंक्शनल GI
कम्युनिटी, उसको किस प्रकार से करेंगे? तो द वन वे इज टू aware the people through the media. The proper information should be given, genuine information. It is not about the management पे आप ये दवाई लो, information that these are the medicines is okay, but with the dosage and what are the symptoms, what may be the presenting symptom, when to consult the doctor, that is to be clearly mentioned for the public awareness campaigns. Now, the problem statement: increased number of healthcare visit, diagnostic tests and surgery. Patients को they may require the frequent visits. Patient को diarrhea होगा, patient जो है वो उसको दिखाने जाना पड़ेगा. So we need to give them a proper care, and they can maintain their normal routine properly without any disturbances. That severely impacts the quality of life. Often misguided and misleaded by the unavailability of true information and the myths. हम और पेशेंट में ये होता है कि जो myths हैं उससे driven होते हैं या फिर self care से driven होते हैं, और they often take the medicine, especially the Ayurvedic medicine from the store, and they start taking this medicine. Many of a patient suffering from the mucus colitis, chronic mucus colitis, which is comparable to the प्रवाहिका और with the IBS. तो यहाँ पर जो है ये पेशेंट अपने आप जो है ये मेडिसिन लेता रहता है कि भाई उसको जो है वो स्टूल पास हो जाए, एक बार में स्टूल पास हो जाए, but at that case the patient basically requires the Kutaj or the Stambana or the Grahi medicine instead of the Rechan medicine. And once a person takes this medicine for a prolonged period, it actually harms the gastric motility. That initiates the pathology of gulma, और गुल्मा होने के बाद पेशेंट को एक जगह पर ये शिफ्टिंग पेन, शिफ्टिंग लंप जैसा जो है ये होने लगता है. The patient may require the increased dosage of the purgative, और उसके बाद भी पेशेंट को ये रिलीफ नहीं मिलती. तो that should not be driven with the myths, but that should be properly diagnosed, and this is needed in this hour. हमें पेशेंट को इसके लिए एजुकेट करना पड़ेगा कि भाई ये there is a different condition. Constipation एक simple term है, पर diagnosing the constipation it is itself a very difficult and tricky thing. What is the exact cause of the constipation, or that is to be elicited out, and then proper medicine is to be used. Last one, usually ये already मैंने जो है ये इसको डिस्कस कर लिया है, पर मैं I've just read it out. Usually consumes over the over-counter medication which may prolong the problem. So we need to improve the knowledge among the people and making them aware to understand this change within them. Now, what are the presentation of the IBS? Functional gastrointestinal disorder, जैसा मैंने पहले ही बात की कि वहां पर स्पेसिफिक पैथोलॉजिकल चेंज जो है वो नहीं होता. म्यूकस कोलाइटिस की जब हम बात करते हैं, क्रोनिक म्यूकस कोलाइटिस की बात करते हैं, तो उसमें इन्फ्लेमेटरी फोकाई जो है वो विजिबल इन्फ्लेमेटरी फोकाई, चाहे वो कैटरल इन्फ्लेमेशन हो, चाहे वो न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन हो, चाहे वो इयोसिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन हो, पर ये इन्फिल्ट्रेशन कॉलन में और कॉलन म्यूकोजा में ये देखने को मिलता है. सो देयर इज अ एस्टैब्लिश्ड पैथोलॉजिकल चेंज विद इन द टिश्यू. सेकंड, in these patient have often presentation of abdominal pain, typically in the both flexures, splenic flexure में, hepatic flexure में. और जब उनको पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, do I need to सर चेंज करने की कुछ जरूरत है, और am I audible? ओके. तो ये जो है वो चेंज हमें मिलते हैं, पैथोलॉजिकल चेंज इन द फॉर्म ऑफ साइन, इन द फॉर्म ऑफ सिम्टम्स. पेशेंट को एग्जामिन करते समय टेंडरनेस जो है ये देखने को मिलती है. तो देयर इज ए स्पेसिफिक पैथोलॉजिकल चेंज, बट इन
majority of this chronic colitis patient, they don't have this specific characteristic, and even with the constipation. तो ऐसे condition में ये जो patient है, they are actually having the IBS, irritable bowel syndrome या irritable bowel disease. So this is the one condition where there is no specific pathological change. Second one, lumen जो है, gastric lumen, sorry, the intestinal lumen की size decrease होना, that may be this spasmodic change. This spasmodic change is occurs due to the mental conditioning, stress के कारण, thoughts के कारण, ये एक प्रकार से functional structure जैसा हो जाता है, and that restricts the bowel motility, और उसके कारण पेशेंट को जो है ये प्रॉब्लम ये देखने को मिलते हैं. सो दिस इज टिपिकली अ फंक्शनल प्रॉब्लम. तो कहीं ना कहीं हम उसको आवरण के साथ या फिर वातिक वैरायटी ऑफ अतिसार के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं. जो चरक ने बताया, भयातिसार और शोकातिसार ये शुद्धतः वायु के कारण ही होने वाले अतिसार हैं, पर जब उनके साथ ये कफ या आंविया आता है तो ये कफ के साथ जो है वात, उसके बाद ये कफ की इन्वॉल्वमेंट जो है ये हो सकती है, और उस प्रकार से उसके ट्रीटमेंट की प्लानिंग हमें करनी पड़ती है. एब्डोमिनल पेन एंड ऑल्टर्ड बॉवेल हैबिट इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन. estimated presentation and prevalence in 10 to 20% of population. Altered bowel habit, it may be constipation, it may be diarrheal presentation. Post-parental urgency is common. Stool pass करने के बाद ये urgency जो है ये होती है. Patient को ऐसा लगता है कि this still has to pass the urine, and patient remains on the commode for a longer period of time. 1 घंटा 50 मिनट. और कोई लोग तो ऐसे होते हैं कि सुबह जो है वो न्यूज़पेपर जब तक नहीं आया तक वो बोवेल जो है वो सेंसेशन नहीं होगी. अगले दिन का न्यूज़पेपर या अगले दिन के कोई मैगजीन लेकर के टॉयलेट में जाकर के न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और ये खत्म करने के बाद जो है वो निपटा करके आएंगे. तो ये जो प्रेजेंटेशन जो है ये कॉमनली ये मिलता है. ब्लॉटिंग इज अ वेरी कॉमन, abdominal bloating and abdominal distension is a very common symptom in these cases. This is the estimated prevention of the different form of the IBS. The commonest form observed, it is the diarrheal form. वहाँ पर diarrhea जो है ये होता है, the patient has to go pass a stool for 2 or 3 times or even more, or occasionally they have the mucus in them. The second variety, the constipation prone, it is bit less. The mixed form or alternative form, it is the second one in the list in the prevalence. And lastly, the unspecific, they may have all the mixed characteristics at the same time. So this is the estimated prevalence of the different form of the IBS. Now coming on to the Ayurvedic consideration. So first of all, IBS अगर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण है तो उसको जो है हम लोगों को पहले अलग करना पड़ेगा. फर्स्ट. सेकंड, इंडिया में जो कॉमनली जो मैकेनिज्म जो हमें देखने को मिलती है क्लिनिकली, इसका स्पेसिफिक रिकॉर्ड दैट इज नॉट विथ द स्टैटिस्टिकली डाटा, बट व्हाट वी फील और व्हाट वी सी, दैट डाटा वी आर नॉट हैविंग. वी डोंट हैव द सपोर्ट ऑफ दैट essential data, but this is correct on the basis of the clinical experiences कि patient को initially जो है ये infective diarrheal condition ये हो, चाहे वो colitis हो, चाहे bacillary dysentery हो, चाहे diarrheal disease, चाहे viral हो, bacterial हो, इस प्रकार initially जो है ये उनको ये problem हो, इमीडिएटली पेशेंट जो है ये बॉवेल फ्रीक्वेंसी को घटाने में ट्रीटमेंट करता है. एंड ड्यू टू दैट वन द क्लिनिकल रिकवरी तो जो है ये आ जाती है, पर पैथोलॉजिकल रिकवरी ये नहीं आती है. और वो पैथोलॉजिकल रिकवरी नहीं आने की वजह से बॉडी में एक चेंज जो है ये हो जाता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हार्डनिंग, और दैट में बी the atrophic changes, what is narrated by Charak in 30th chapter of the Chikitsa Sthan
काठिन्याद ऊन भावाद्वा दोषोन्तः कुपितो महान पत्ते मृदु अल्पताम नीतो मृदु दोष करो भवेत्। तो ये काठिन्य का भाव, ये हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लाजिया या फिर एट्रोफी या एप्लाजिया हो जाता है, एंड दैट इज द change within the tissues, and the patient may have the problem with minimal exposure, and the tolerance level of the patient toward the food, stress, atmosphere reduces, and the patient start the complaint either diarrhea or either constipation, what is the specific type the person has, or the alternative form. तो ये एक जो है ये विधि है. Now coming on to what should be the approach, जो पैथोलॉजिकल चेंज जिसे हम कंपेयर कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं कफ और वायु दोनों के साथ में जो है ये चलता है. और ये चरक ने बेसिकली ये श्लेष्मज प्रवाहिका के साथ ये कंपेरेबल है. वहां पर पेन जो है ये थोड़ी है, यहाँ पर पेन जो है ये इट इज नॉट अ कार्डिनल फीचर. आमे परिणते यस्तु विबद्धम अतिसार्यते सशूलम पिच्छम अल्पाल्पम बहुशः सप्रवाहिकम. तो चरक की प्रवाहिका में डिस्क्रिप्शन में थोड़ा जो है वो डिफरेंस है, विच इज फ्रॉम द माधव निदान और सुश्रुत, विच इज स्पेसिफिकली द इन्फेक्टिव पैथोजेनेसिस, चाहे वो एमईबीएस हो, चाहे वो बैसिलरी डिसेंट्री हो, वहां पर उसके साथ जो है वो डायरेक्टली जो है वो कंपेरेबल है. पर आमे परिणते यस्तु विबद्धम अतिसार्यते, पेशेंट को ऑलरेडी प्रॉब्लम हुआ है और उसके बाद जब कंटिन्यूअस और प्रॉपरली मैनेज नहीं हुआ, या फिर उसके सीक्वली के फॉर्म में जब ये होता है, तो उसमें आम के परिणाम के उपरांत शरीर में कुछ दोष रह गए हैं, गोष्ठ में दोष रह गए हैं, और उसके परिणाम स्वरूप रोगी मल की प्रवृत्ति विबद्धता के साथ और वारंवार मल की प्रवृत्ति ये होती है. नाउ ट्रीटमेंट, जो इसकी डिटेल में मैं बाद में जाऊंगा, जो चरक ने इसके ट्रीटमेंट में एक काफी इंपॉर्टेंट बात बताई है, दधि दाढ़ी में सिद्धे ने बहु स्नेह न भोजयत. यहाँ पर बहु स्नेह की बात की है, तो द पेशेंट नीड्स मोर अमाउंट ऑफ स्नेह. I will take this one in the next few slides. I'm just continuing to the next slide. What are the essential for diagnosis? Already we have seen this one. Now coming on to the short term and long term objective in the IBS. IBS एक दिन में जो है वो ठीक नहीं होगा. The patient needs a long term management. The patient needs the holistic approach and may need to continue a proper diet and regime throughout the life for a better quality. But what should be the short term objective and what should be the long term objective? Patient को जब acute condition है, जब उसको patient को problem बढ़ रही है, तो what should be the our objective? First, to regulate bowel. इस प्रकार से select हम करें. शारंगधर ने अलग अलग 4 प्रकार के जो है वो विरेचन के लिए बताई है औषधियां, रेचन, स्रंसन, वेदन. तो इस प्रकार से हम सिलेक्ट करके उसकी मेडिसिन को ये ट्रीट करें, या फिर ड्राई या स्तंभन अगर ये डायरियल प्रोन है तो. नेक्स्ट वन इज पेन रिलीफ, रिडक्शन एंड पैरोक्सिज्म ऑफ एक्यूट एब्डोमिनल पेन. पेशेंट को सीवियर एब्डोमिनल पेन ना हो, उसके लिए मैनेजमेंट और उसको किस प्रकार से ये पैरोक्सिज्मल अटैक है उसको प्रोलॉन्ग किया जा सके, तो हेल्थी पीरियड को किस प्रकार से हम इंक्रीज कर सके. टॉलरेंस लेवल टुवर्ड द फूड, टुवर्ड द स्ट्रेस एंड टुवर्ड द एनवायरमेंटल फैक्टर इज टू इंक्रीज. तो जो कॉमन जो पानी जो हम पीते हैं, तो वो पानी के चेंज के कारण डायरिया इमीडिएटली किसी को हो जाता है या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो उसकी इफेक्ट ये कम हो. एंड डिक्रीज इन द सिम्टम्स ऑफ ब्लॉटिंग एंड डिस्टेंशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन. पेशेंट को ये ना हो तो मोस्टली पेशेंट जो है वो ठीक ठाक रहता है, उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होती. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, भाई भूख लगनी चाहिए, हमें खाना अच्छा होना चाहिए, हम खा सके ठीक से, इस प्रकार से हमें कर दो. तो ये हमें शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव जो है ये लेकर के चलना पड़ेगा. लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में वी नीड टू focus on the proper metabolism, digestion, metabolism and assimilation of the food. The patient should be well nourished
उसका वेट जो है, बॉडी मास जो है वो प्रॉपर हो, मसल मास जो है ये प्रॉपर हो, साइकोलॉजिकल वेलबींग प्रॉपर हो, तो उस चीज को हमें जो है वो फोकस करना पड़ेगा। दैट इज फॉर अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, देह बल ठीक से हो, काम करने में उसको असमर्थता ना लगे, साइकोलॉजिकली उसके नींद ठीक से आए, ठीक से उठ जाए, मन में फ्रेशनेस रखे, हैप्पीनेस रखे, बॉडी हैवी ना लगे, तो ये जो है ये दैट इज इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। लॉन्ग टर्म रिलीफ इन द सिम्टम, इंक्रीज टॉलरेंस अगेंस्ट द मेंटल माइनर चेंजेस, एंड लास्टली द मेंटल वेलबींग, मेंटेनेंस ऑफ द मेंटल वेलबींग। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। तो रुक उपशमनम ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है ट्रीटमेंट का। द सेकंड वन इज टू इंप्रूव दी देह बल। द सिम्टम्स में भी स्वर वर्ण योग, शरीरोपचय, बल वृद्धि ही। चित्त बल की जब बात करें तो निद्रा लाभ हो, यथा काले सोने के टाइम पर नींद आ जाए, वैकारिकाणाम स्वप्नानाम अदर्शनम, सुखे न प्रतिबोधनम, जब उठे तब ठीक जो है वो फील करता हो, वात मूत्र पुरुष रेतसा मुक्ति ही। ये मन और अग्नि दोनों के साथ रिलेटेड है, तो वात मूत्र पुरुष की मुक्ति ठीक से हो, और सर्व इंद्रियाणाम च व्याप्ति रीति, तो इंद्रिय की जो भी कार्य हैं, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और मन, उनके काम जो है वो ठीक से होते रहें। अव्यवहार्य अभिलाषा, ठीक समय पर भूख लगे, रुचि आहार काले, अव्यरतस्य आहारस्य काले सम्यक जरणम, जो भी फूड लिया है वो ठीक से ठीक समय पर 3.5-4 घंटे पर ये जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, 5-6 घंटे, और उसके बाद भी भूख न लगे, या फिर उसके बाद जो है ये ब्लोटिंग हो या फिर डकारें आती रहे, ऐसा जो है वो ना हो, और वात मूत्र और पुरुष की मुक्ति ठीक से होती रहे। तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ और इम्प्रूवमेंट किस प्रकार से होना चाहिए, ये होलिस्टिक अप्रोच जो है ये आयुर्वेद का है। दिस दी ऑलरेडी डिस्कस, बट जस्ट सम अप ऑल दिस थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज अग्नि, तो उसके लिए स्नेह जो है ये सबसे ज्यादा उपयोगी है। स्नेह में वो परम विद्या दुर्बलानलदीपन, नाम स्नेह समिद्धस्य समायानम सुगुर्वपी। तो स्नेह जो है उसमें खास करके गाय का घी, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है फॉर क्रॉनिक डिसऑर्डर। एक्यूट डिसऑर्डर है जहां पर अग्नि के मंद है, वहां पर हमें चित्रक वगैरह का यूज करना पड़ेगा फॉर अ शॉर्टर टाइमिंग, बट व्हेन वी वांट फॉर अ लॉन्गर पीरियड क्रॉनिक एलिमेंट जैसे आईबीएस को ठीक करें, वहां पर अग्नि को लंबे समय तक ठीक होती रहे। गट्स की फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी को इम्प्रूव करना, उसमें जो है वो प्राइमरी जरूरत होगी, और उसमें उसको डेवलप करने के लिए घी ही एक ऐसी चीज है कि जो मोस्ट होलसम लिपिड है, मोस्ट होलसम फैट है, वो यूज हो। वही ट्रीटमेंट में भी आमज प्रवाहिका में चरक ने बताया, दधी दाड़िम सिद्धि न बहुस्नेही न भोजेत। तो दधी और दाड़िम के साथ साधित स्नेह और बहुत स्नेह के साथ आहार को लिया जाए, तो स्नेह का यहाँ पर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज द रेगुलेशन ऑफ वायु। वायु अग्नि संरक्षण के काम में भी मदद करता है, मनोवह स्रोतस को रेगुलेट करने में मदद करता है, पुरुष और मूत्र की प्रवृत्ति में भी ये रेगुलेटर है, तो उसको जो है वो रेगुलेट करना, जो 5 प्रकार के वायु की चिकित्सा बताई है उस प्रकार से उसको रेगुलेट करना। द नेक्स्ट वन इज दी रसायन चिकित्सा, जो आमाशयगत रोग या फिर पुरुषाशयगत रोग, उनको किस प्रकार से ठीक कर सके, उस पे हिसाब से रसायन जो है इसका यूज करना। तो रसायन के एक जो है वो एडेड डेफिनेशन जो शारंगर ने बताई, वहां पर रुक उपशमन या फिर रोग की चिकित्सा, ये भी जो है उन्होंने इंक्लूड किया है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ओरिजिनल प्रकृति, जो पैथोलॉजिकल चेंज है, हिस्टो इनकॉम्पैटिबिलिटी हुई है या फिर नॉर्मल होम्योस्टेसिस जो डिस्टर्ब हुई है, उसको रिस्टोर करना। तो जैसे ही ये रिस्टोर होगी तो टॉलरेंस जो है ये बढ़ता जाएगा और इंटॉलरेंस कम होगा। पेशेंट को माइनर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, एक्यूट स्ट्रेस
minor diet changes, minor environmental changes, sleep and awakening disturbance, उसके कारण ये प्रॉब्लम जो है ये नहीं होगा। जेट लैग है जहां पर ये टाइम जोन काफी जल्दी से चेंज हुआ है तो वो अलग बात है, पर शॉर्टर टाइम जोन है, जैसे इंडिया में ही हम बात करें तो गुजरात और ईस्ट में बंगाल, तो यहाँ पर करीब करीब 1.5 घंटे का डिफरेंस है। यूजुअली इतना डिफरेंस जो है बॉडी अडॉप्ट करते समय एक आध दिन से ज्यादा का समय नहीं लगता, पर कुछ एक लोगों को इसमें जो है वो काफी लंबे समय तक ये रह सकता है, और खास करके जो आईबीएस के पेशेंट है उसमें ये प्रोनाउंस जो है ये रहता है, तो उसको हम टॉलरेंस लेवल उनकी बढ़ा दे तो दिस इज दी बून फॉर देम। नेक्स्ट वन इज द स्ट्रेस मैनेजमेंट। पेशेंट का साइकोलॉजी पार्ट जो है उसको ठीक करना चाहिए। यहाँ पर मैं सेविल्स का एक वाक्य जो है मैं कहना चाहूंगा, जो मैंने आगे की स्लाइड में रखा है, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ। Often unhappy and unhealthy atmosphere at work or home needs correction, and patient should be discouraged from examining the stools every time. ये दो चीजें सिविल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ये काफी क्लियरली मेंशन की है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट शुड बी डिस्करेज फ्रॉम एग्जामिनिंग स्टूल एवरी टाइम। ओके फाइन, एक आध बार में जो है वो चेक करता रहे, पर उसकी जो है वो इफेक्ट क्रोनिक स्ट्रेस में पेशेंट ना चला जाए, एक्यूट स्ट्रेस में पेशेंट ना जाए। आज जो है वो बोवेल ही नहीं आया है, आज बोवेल में मान लो कोई जो है ये तिल खाता है, तो तिल जो है यूजुअली अगर थोड़ा जल्दी से खा लिया है तो तिल जो है वो अनडाइजेस्टेड जो है ये हो सकता है। तो फ्रीक्वेंटली अगर ये ऐसा हो तो हमें वो देखना चाहिए। अगर ये एक आध बार हुआ है, दैट नीड्स टू बी इग्नोर्ड। सो द इग्नोरेंस is bliss in this case. Secondly, the proper atmosphere at work and at home, ये दोनों जो है ये important है। तो stress management, it is the key of the holistic management and discouraging the patient, this already I have discussed. Proper Agni, wholesome diet and stress management can assure the normal homeostasis of the guts, the bowels. Now the challenges, नो स्पेसिफिक डेमोन्स्ट्रेबल पैथोलॉजिकल चेंज। हम स्पेसिफिक नहीं है तो हमें जो है वो पेशेंट की साइकोलॉजी या फिर फंक्शनल स्टेटस के हिसाब से ही इसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। देयर में बी द माइक्रोस्कोपिक इन्फ्लेमेशंस, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑल्टर्स द होलिस्टिक लिविंग। तैस्ते भावै सोचत अल्पासनस्य बाष्पोष्मा वै वन्यमाविश्य जंतो कोष्ठम गत्वा क्षोभयन्तस्य रक्तं तच्चादस्तात् काकणन्ति प्रकाशम् निर्गच्छेत यविर्विमिश्रम यविर्वा शोकोत्पन्नो दुश्चिकित्स्योति मात्रम। दिस इज बेसिकली in reference of the Shokatisar, but Shushruti here describes that Shokotpanno dushchikitsyoti matram. It becomes difficult to treat as the psychological factors, the shok, the grief is playing its role in the pathological process. ये constant inflammation, irritation ये करता रहता है, and that is leading to the ulceration, micro ulceration or macro ulceration in the large intestine. ये ulcerative colitis को ये form करता है. तो ये दुष्चिकित्स्य है, तो हमें उस प्रकार से इस चीज को स्वीकारना पड़ेगा. ये फंक्शनल है और साथ में साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स इसकी जो है वो प्रोनाउंस्ड है. So there is a challenge. The patient needs to be counseled every time. The thought process have the effects on bowel. This is already we have discussed. Holistic healthcare benefit. Ayurveda ही इसमें क्यों? It maintains the triad. दोष धातु मल तीनों को ये maintain करता है, and that's why we need to focus more on Ayurveda for the management of IBS. Routine life activities may be continued without any difficulties. It manages all the three components of body, that is the psyche, soma and soul. The herbal medication are usually well tolerated and doesn't possess any major adverse drug reaction. तो ये डिपेंडेंसी भी कम रहती है, टॉलरेंस लेवल भी जो है वो अच्छा रहता है. और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज जो हर्बल मेडिसिन में है,
आयुर्वेद मेडिसिन में है कि दे डजंट हैव major adverse drug reaction, so that may be continued for a longer period of time, and they are used in practice since centuries and no safety issues has been observed. Proper diet, stress-free life, Ayurvedic medicine will definitely lead to an improved quality of life. Thank you very much. I am dedicating this presentation to my grandfather, from whom I have able to learn something from his ocean of knowledge. Thank you very much, sir. Thank you very much, Pawan sir and Thank you, Agni sir, Nishanji. for Thank giving you very me much. the chance. Thank you, sir. Thank you very much. Now I would like to request Dr. A.K. Gupta ji, renowned homeopathy expert from Delhi. Welcome, sir. Am I audible? Ji, Hello? yes, you are audible. Can I share the screen, please? Yes, you can, sir. You are co-host. Good evening, everyone. And it was. Yes, you can go for slideshow, sir. Yeah. Is it visible? Yes. Okay. It was very, very heartening to hear Dr. Nishant Shukla and Dr. Agni has given very nice, introduction already. And I know about the irritable bowel syndrome awareness month we are observing in April month. So here I will be talking about a homeopathic and psychological. Sir, excuse me, your voice is not very clear. It is somewhat echoing or some distorted sound is coming. Little bit. Okay. Is it okay now? Or shall I use another one? Later one. My headphone can't jump. Nothing. If you please continue. Meanwhile, yeah. Hello. It's fine, sir. Okay. Carry on. Hello. Voice Is is it clear. work? Yes, please Okay. continue. Continue, please. Hello. Yes, Your voice is audible, sir. You are audible. Please continue. Hello. हाँ जी, आप ऑडिबल हैं. आपकी आवाज आ रही है गुप्ता जी? Please continue. Your voice is now audible. आवाज आ रही है? हाँ जी Hello. आ रही आ रही है. आ रही है अब आवाज आ रही है? जी आ रही है आ रही है प्लीज. सर. हेलो. आवाज आ हाँ, रही है? आवाज आ रही है सर. आ रही है. आवाज आ रही है. बिल्कुल नहीं आ रही. Okay. आवाज आ रही है हमको. So what we do is, irritable bowel syndrome, and I'll be talking about the homeopathic and psychological perspective. And what is IBS? I think which has already been discussed and talked about number of times with the previous speakers. It is a functional disorder of the lower gastrointestinal tract characterized by abdominal discomfort and alteration of bowel habits in the absence of any organic disorder. It is a disorder of the gut-brain axis and has no
organic cause. Studies suggesting the prevalence of IBS in the Indian population are not very conclusive, although suggest prevalence rate are about 4 to 5% in North Indian community. Silent symptoms, as you can also see in the picture also, it's the abdominal pain or discomfort, frequent diarrhea or constipation, change in bowel habits, urgency for bowel movement, feeling of incomplete evacuation, and that's what we have a typical feeling of tenesmus, bloating or abdominal distension. People with IBS more commonly than others have gastroesophageal reflux symptoms related to genitourinary system, chronic fatigue syndrome, fibromyalgia, headache, backache, and psychiatric symptoms such as depression and anxiety are very common. And the most important is in males, there's reduction in libido also. As such, exact cause of the IBS are still unknown, but recent evidence indicates that there are abnormal levels of mast cell expression and activation in specific part of the gastrointestinal tract, which are unique to each subtype of IBS. Risk of developing IBS increases sixfold after acute gastrointestinal infection, which was again discussed earlier by the previous speaker. Further risk factors are young age, prolonged fever, anxiety, and depression. Antibiotic use appears to increase the risk of developing IBS. Research has found that genetic defects in immunity and epithelial homeostasis increase the risk of developing both post-infectious as well as other forms of IBS. Certain personality characteristics like getting easy tensed up, excessive concern about one's physical health, low stress, poor coping ability have been found to be present in people with IBS. This has been a study which was there. Anxiety, sensitivity, that is the tendency to believe that anxiety and its symptoms are harmful to the body or mental state has been suggested as a possible cognitive mechanism of abdominal symptoms and anxiety in people with IBS. Stress has been found to play a major role in IBS as it can lead to the worsening of the symptoms, particularly the vomiting, diarrhea, and constipation. Studies suggest that for 25 to 30% of chronic IBS patients who would be considered moderate to severe, psychological treatments may be the best alternative and certainly have a role to play in comprehensive care of the IBS patient. As far as the investigations are concerned, you can do tests done. You can get a complete hemogram, liver function test, abdominal ultrasound, endoscopy, and colonoscopy. And in certain cases, people go in for some scanning also. What one can do to prevent, and what are the preventive measures? First of all, the patient must be advised to go in for low carbohydrate diet, proton pump inhibitor used to suppress the stomach acid production, which may cause bacterial overgrowth leading to irritable bowel syndrome symptoms, and thus should be discontinued. Avoid stress of any kind, drink plenty of water, and exercise in the form of yoga is of great help. Coming to my forte, which is homeopathy. And homeopathy is the answer to irritable bowel syndrome. For long, scientists have been trying to ascertain the exact reason for the bowels to suddenly start behaving indifferently in a man. When other causes are ruled out, then the person labeled as an IBS patient with no apparent cause. And this is a situation in present day also. When no proper cause could be found, the scientists
attributed IBS to being a psychosomatic disorder, which means a disorder which is resultant of stress, anxiety, and depression. And that is why we see much more number of cases of IBS because of these underlying prevalent factors. It is hence believed in modern medicine there is no permanent cure for this condition as per to the modern medicine. But as we have been talking about homeopathy and Ayurveda, we have been seeing the cases of IBS after long complete treatment with holistic approach. They completely get cured. There's not one or two. Number of cases have been there which we have seen in our clinic. But homeopathy, on the other hand, has a great deal to offer in IBS or any kind of somatic, psychosomatic disorder. As the basic principle of homeopathy, a system of medicine is that the medicine is prescribed on the basis of the patient's constitution. It means a homeopathic doctor takes into account not just only the physical symptomatology that the patient is giving, but also the entire mental framework of him. That is what we say the constitution means his mental, physical, emotional, environmental, reactions, and which differs from individual to individual. And that is what is more important from homeopathy is the individualization of the case. Like even if 4 patients of IBS are there, it is not necessary that all the 4 patients would be treated by the same medicine. Whereas, incidentally, in modern medicine, it would remain the same because they've been treating the disease as per symptoms, but we have been treating the disease as per the constitution of the patient, individual. And I'm sure even the Ayurveda also believes in that, जहाँ पे हम उनके पेशेंट की इन सब चीजों की तरफ ध्यान रखते हुए ही उसका इलाज करते हैं. As in how is the mental set, his decision making, any fear complex, his basic temperament, etc. When the patient is treated as a whole like this, then the chances of patient getting completely becomes extremely high, because when the patient is being treated for his constitution, then the possibility of getting cured is much more, rather than he's treating symptoms of on the physical basis only. A correct homeopathic medicine, when given taking all the above mentioned factors, then the immune system of the individual becomes so strong that it roots out the disease completely, and it is able to take care of the tendency which a person has been having for quite some time, or even the family, those who have been undergoing such kind of a problem repeatedly. If they have been treated in a proper homeopathic manner, they have been able to get out of this tendency and they become completely cured. Similarly, in case not all the patients act the same way, so it is in treating a group of irritable bowel syndrome cases would be the medicine selected would depend entirely on the constitution of those cases, which is, I think, is the USP of homeopathy, because individualization is the one thing which gives the specific tailor-made treatment for that particular patient only. There are many medicines which work very well on the psychosomatic axis of the body. Just a couple of medicines are argentum nitricum, arsenic album, carcinosin, gelsemium, sulfur, nux vomica. These are the medicines which have been found very effective, but this does not mean a patient of IBS has seen this medicine working better and starts taking on their own. It is there's definitely a rider or a caution that patients should not take any medicine on their own. Self-medication without the consultation of a homeopathic consultant is not advisable, though it may not do any adverse harm as per of modern medicine, but certainly it may not be able to give you the
proper desirable result. And if the desirable result is not being obtained by that medicine, so people think that homeopathy is not work. It is not the homeopathy, it was the wrong choice of medicine which was taken by the individual or without taking the constitution into account. The medicine has been taken. It might give you a partial relief, but then the problem may recur. And to get completely, it is always better to take the, typical constitutional individualistic approach treatment by a proper homeopathic doctor. Stress is usually manifested in the form of fight or flight, which is done by the nervous system of the human being. In a stressful environment, the 10th cranial nerve, called the vagus, in alliance with the autonomic nervous system, manifests in a patient in the form of fear, anxiety, palpitation, sudden constipation or diarrhea, vomiting, excessive sweating, or trembling. So much so you must have come across number of patients in your clinic that a patient who has been sitting absolutely fine, there has been no problem, and suddenly he gets a news, bad news or shocking news, and suddenly he rushes to the toilet and from nowhere the stool comes. So from where the stool comes is the, typical vagus nervous system which triggers this kind of a, and such kind of a, symptomatology. Homeopathy has been very, very effective in treating such kind of a patient. With the homeopathic medicine, this balance is tried to regain. Once this homeostasis is achieved, the patient gets rid of all these complaints and is completely cured. Now, psychological intervention is a very, very integral part of IBS patient. Psychoeducation, educating the patient about the condition, its probable causes, role of psychological factors in the causation, maintenance, IBS. Psychotherapy is like cognitive behavior, hypnotherapy have been found to be effective in the treatment of irritable bowel syndrome. The treatment plan is utilized for each person depending on the nature of problem and his overall personality dynamic. The stress management learning effective way of managing daily stress will improve the overall gastrointestinal functioning, as well as relaxation training is one such way. Regular exercise, healthy diet, and a structured daily routine is advisable. To eat is human, to digest is divine. That's what has been said by Copland, and thank you very much for giving me patient hearing and an opportunity to speak about my homeopathic and psychological aspect perspective on treating the irritable bowel syndrome cases. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, sir. मैं बहुत ही आपका धन्यवाद अदा करता हूं। आपने बड़े सरल शब्दों में होम्योपैथी की महत्ता के बारे में बताया और आशा करता हूं कि लोग इससे लाभान्वित होंगे। मैं अब IBS के एक्सपीरियंसेस के लिए संक्षिप्त में आमंत्रित करता हूं आलोक शर्मा जी को। प्रणाम। प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा बहुत सारा पार्ट जो थ्योरेटिकल था ऑलरेडी होम्योपैथी आयुर्वेद में डिस्क्राइब हो चुका है। जी, केवल संक्षिप्त में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस सर। देखिए, मेरे हिसाब से अगर हम IBS की हिंदी करेंगे तो हम बड़ा कंफ्यूज रहेंगे। ये व्याधि तो नहीं है, लक्षण पुंज सिंड्रोम है, डिफरेंट डिजीजेस मिलके एक दिखाई देता हैगा। तो चिकित्सक के दृष्टिकोण से आयुर्वेद में हमें सोचना पड़ेगा क्या ये आमाशय समुत है या पक्वाशय समुत व्याधि है। तो इसमें अग्नि माध्य समानता सभी व्यक्ति रोगियों में मिलता हैगा। अग्निमंद के कारण उसका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के अंदर जो आजकल IT सेक्टर में देख रहे हैं, रात को जगना, दिन भर काम करना, बैठना
और बाजार से मंगा के खाना खाना खा के बैठे रहना। इस सब के लिए हमको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की गाइडलाइन उस पेशेंट को बतानी बहुत जरूरी है। और दूसरा, जब भी ये होता, हर समय व्यक्ति को आईबीएस नहीं रहता, एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब उसको अटैक से पड़ता रहेगा, और अटैक के उस व्यक्ति में कॉज क्या है, उस कॉज को ढूंढ करके उसको बताना कि आपको इससे बचना है, ये अति आवश्यक है। और ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, हर पेशेंट में डिफर होगा। कोई जरूरी नहीं कि वो रिपीटेड कॉज मिले कि सब उसको उस कारण से होता है। कोई साइकोलॉजिकल होते हैं, कोई टेंशन वाले होते हैं। कोई एक अभी सुबह एक पेशेंट देख रहा था, वो मतलब दुनिया में कुछ भी पहले उनको परेशानी हो जाती है, घर में कुछ उनको परेशानी हो जाती है, तो उस सबको दूर करने के लिए आपको जो है ना, आप्तोपदेश के ढंग से, मतलब आप्तवचन जो कहते हैं, प्रभु की वंदना या योगासन प्राणायाम जैसी चीजें जोड़ना बहुत जरूरी है। केवल मेडिसिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और निश्चित रूप से जब ऐसे फैक्टर्स जो उसको थॉट वर्किंग प्रोसेस को चेंज कर रहे हैं, जिसके कारण से अग्निमांद्य हो रही, अग्निमांद्य से जो दूषी विष बन रहा है वो वृद्धवांश से बाहर आ रहा है। आंत्र लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व नहीं है, पर वहां से विष तो बाहर आ रहा है, तो हमें उस फैक्टर्स को रिमूव करना अति आवश्यक रहेगा। और मैं मोस्टली ऐसे केसेस के अंदर जो मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि इनका थॉट वर्क सोचने का प्रोसेस बड़ा डिस्टर्ब होता है, हर समय टेंस रहते हैं, तो मैं शिरोधारा को बड़े आराम से ऑप्ट करता हूँ और लोग ले लेते हैं, उससे कंफर्ट में भी आते हैं। क्योंकि जब तक ब्रेन का हम कूलिंग नहीं करेंगे, हम इस प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते, कितनी भी एडवाइस दे लें। दूसरा ये है कि खाने का टाइम उसको बताना बहुत जरूरी है। तो खाना खाना कैसे है, जो हमारा आहार विधि विशेषज्ञ आयुर्वेद में लिखा हुआ है, वो अगर हम पेशेंट से शेयर नहीं करेंगे तो उसकी डिजीज हम ठीक नहीं कर पाते। ठीक है, लूज मोशन ठीक कर लेंगे, कब्ज ठीक कर लेंगे, पर वो टेम्परेरी होगा ना। तो उसको आहार विधि विशेषज्ञ जैसी चीजें बताना बहुत ही आवश्यक है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बताना जरूरी है, और उस व्यक्ति का जो कॉज है उसको दूर करना। मैं जनरली स्नेह स्वेदन शिवधारा का काफी प्रयोग करता हूँ, इसका मुझे लाभ भी मिलता है, क्योंकि मेरे पास तो पेशेंट ही हुए आते हैं जो एलोपैथी से फेल हुए होते हैं या उनके ट्रीटमेंट लेते हुए आते हैं। तो मैं इतना से ही कहूंगा कि उसका थॉट प्रोसेस को चेंज करें, उसका पर्टिकुलर कॉज ढूंढें, बातें करें। और ये पेशेंट बातें करना खूब चाहता है, जितना आप बात करेंगे, जितना आप एग्जामिनेशन करेंगे, वो बड़ा कंफर्ट जोन में आता है, और आपको बातें करते करते एक क्लू लग जाएगा कि कहाँ क्लिक करना है, इसको तो स्टॉप करना, इतना करें। मेरा इतना से अनुरोध है जो मैं चिकित्सा में करता हूँ। और आपकी सूचना के लिए आपको अच्छा लगेगा, इस 7 अप्रैल को मेरठ के आईएमए ब्रांच ने, आईएमए ब्रांच ने मुझे एज ए गेस्ट स्पीकर इनवाइट करा। ये आयुर्वेद के लिए बड़ा गौरव की बात है, क्योंकि आईएमए बहुत कम एज ए गेस्ट स्पीकर इनवाइट करता है। तो उस दिन मैं बोलूंगा, और मैं यही कहूंगा, उस व्यक्ति का कॉज ढूंढें, अग्निमांद्य ना होने दें, और उसका सोचने का प्रोसेस ठीक करें, व्यक्ति ठीक हो जाएगा। मेरा ये अनुभव है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं तीनों हमारे विद्वान वक्ताओं के संक्षिप्त उपसंहार के लिए प्रार्थना करता हूं आदरणीय अग्निहोत्री सर से। फिर उसके बाद हम ऋतु हरित की शुरू करेंगे, लेकिन पहले आईबीएस पे हम लोग जो भी एक बहुत अच्छा चर्चा रही, एक जैसा भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस आदरणीय आलोक जी के आए, निशांत जी का बहुत ही अच्छा एक कंट्रीब्यूशन रहा, और होम्योपैथी की ओर से आदरणीय डॉक्टर AK गुप्ता जी ने बड़े सरल शब्दों में होम्योपैथी की विवेचना की। मैं सभी का आभार मानता हूं, और आदरणीय अग्निहोत्री जी से संक्षिप्त उपसंहार की प्रार्थना करता हूं। इन द मीन टाइम हम लोग नेक्स्ट वेबिनार ऑन ऋतु हरित की वी विल स्टार्ट। अग्निहोत्री से नमस्कार, थैंक यू प्रोफेसर पवन शर्मा जी। बड़ा अच्छा आपने जिम्मेदारी सौंपी और विश्वास जताया मेरे ऊपर। इतने 3 महान विद्वानों के विचार जो आज की गेस्ट स्पीचेस के तौर पर हमें हमारे प्लेटफॉर्म को मिले हैं, उन पर हम संक्षिप्त समीक्षा करें। मुझे तो अच्छा ये लगा कि हम लोग आज समय से चल रहे हैं और हमारी दूसरी वेबिनार भी अच्छी आ जाएगी। हम शुरुआत करते हैं प्रोफेसर निशांत शुक्ला जी ने, जैसा कि हमें आशाएं थी आईबीएस लेके चलेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा आयुर्वेद में, लेकिन आयुर्वेद में आईबीएस से अधिक मिल जा रहा है। आमाशयगत विकार को देख के, कौशयगत विकार को देख के और आंतरगत विकार को देख के, और सिम्टम बेस अगर लेते हैं तो ये चीजें तीनों अंग प्रभावित होते हैं। और विशेष रूप से प्रोफेसर साहब ने अपने विद्वता से बतलाया कि यहाँ पर तीनों चीजें आ रही है, दोष भी हो रहे हैं, हमारी धातु भी हो रहे हैं और मल भी हो रहे हैं।
तो दोष धातु मल के बीच में अगर समन्वय बना रहता है तो आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से हमारा स्वास्थ्य है और वो बना रख सकेगा। इसके बाद उन्होंने पूरी चर्चाएं, इसके हेतु, इसकी डीप इटोलॉजी और उसके आयुर्वेद से समीकरण मिला के जो चर्चाएं की, और विशेष रूप से एक उल्लेख कर दिया उन्होंने कि हमारा ऋतु हरित की में उपलब्ध ज्ञान और कुटज, इन दोनों के सारे कुटज को लंबे समय तक दे के हम उसकी इरिटेबिलिटी को कम करते हैं और उसके बाद उसका मोशन बंद किया आएगा। हम ये ना माने कि कुटज केवल स्तंभन करके बिल्कुल उसको डायरिया ही चेक कर देगा, उसके लिए कहीं ब्लॉटिंग या दूसरी और चीजें बढ़ न जाए। ब्लॉटिंग खत्म होती है और एक रेगुलर मोशन की बात आ जाती है। नंबर 2 पर मतलब दूसरा ज्ञान मुझे मिला होम्योपैथी से। जैसे जाते छोटी छोटी पिल्स होती है, लेकिन 2 सेंटेंसेस उनके होम्योपैथी के टोटल सबमिशन पर आ गए सामने। एक तो उन्होंने लिखा, मैंने इसको कोट भी कर लिया है अलग से, कि होम्योपैथी इज द आंसर टू IBS। आई जस्ट नोटेड डाउन। मतलब ये है हमारी पैथी का कॉन्फिडेंस, और इसीलिए हम AYUS और H हैं। हम H इसीलिए हैं कि अगर हमें सारे को छोड़ के अपने विभाग के H में जाना पड़े तो हमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें मरीज के स्वास्थ्य के लिए काम करना है। और दूसरी चीज उन्होंने जो सबमिट करने के लिए बताई वो इतनी बढ़िया बताई, टू ईट इज ह्यूमन बट टू डाइजेस्ट इज डिवाइन। मतलब इसके आगे बचता क्या है? इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि हम अपने व्यक्ति के मैंने इनडिस्क्रिमिनेटली कुछ भी खाते रहें, लेकिन हम पचा पाएंगे नहीं पचा पाएंगे, ये हमारी वैश्वानर, हमारे जो अग्नि देवता है, जो हमारी अग्निमानदता या अग्नि की समता है, उस पर निर्भर करता है। और उसी को आगे बढ़ाया डॉक्टर आलोक शर्मा जी ने बड़े शार्प शब्दों में कहा कि हम एलोपैथी के बीच में बैठ के काम कर रहे हैं। मरीज हमारे पास तभी आता है जो ट्रीटेड होता है,